Good morning, class 8. Welcome back to your biology classroom once again. Hope all of you watched the last video. Today I am going to discuss artificial pollination. So let's start your lesson. Just look at your book. Artificial pollination is performed to produce a new variety of plant with certain required characteristics. In this process, two different varieties of crop plant with the desired characteristics are selected. मतलब दो अलग प्लांट हम चॉइस करेंगे जिसका क्वालिटी और वैरायटी सुपीरियर हो. फॉर एग्जाम्पल, वन वैरायटी मे बी हाई यील्डिंग एंड द अदर वैरायटी मे बी डिजीज रेजिस्टेंट. मतलब एक होगा हाई यील्डिंग, मतलब जिसका ग्रेन प्रोड्यूशन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के साथ दूसरा जो होगा वो होगा डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब जिसका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है डिजीज को प्रोटेक्ट करने में. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस वैरायटीज, क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन टू गेट ए वैरायटी ऑफ प्लांट which has both the desired characteristics from the parent varieties. So ये सब क्वालिटीज जो है ये चूज करने के बाद हम लोग आर्टिफिशियली पॉलिनेशन प्रोसेस करवाता है, जिस दौरान हम लोगों को बोथ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है एक पेरेंट वैराइटीज में. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is a biological process in which through artificial pollination different types of superior qualities or desired characteristics are mixed in a parent varieties. The new variety formed is called hybrid. With this process जो new variety form होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Hybrid. Many hybrid high yielding varieties of wheat, rice, maize have been produced by the process of hybridization. The steps in the process are explained in figure 2.18. So this is the process. In artificial pollination, during hybridization, the stamens of a bisexual flowers are removed before their anthers mature. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर चूज करेंगे जिसके अंदर एंथर मैच्योर होने से पहले ही हम लोग स्टैमेन को रिमूव कर देंगे. एंड इन दिस फ्लावर विथ गाइनोसियम इंटैक्ट, वही फ्लावर में उसका गाइनोसियम इंटैक्ट रखेंगे एंड इज कवर्ड विथ ए पेपर और मसलिन बैग टू प्रिवेंट नेचुरल पॉलिनेशन. नेचुरली पॉलिनेशन ना होना पाए इसलिए हम लोग गाइनोशियम को इंटैक्ट रखेंगे किसके अंदर कवर करके? आइदर पेपर और मसलिन बैग. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर मैच्योर्स, सो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लावर मैच्योर्ड, देन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर सिलेक्टेड प्लांट्स आर टेकन एंड डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा. सो आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स collected from another plant and just deposited upon the stigma. The seeds produced after artificial pollination give rise to a new hybrid variety. So after this pollination, a new hybrid variety is produced, which is generally better than the parent plants. So after formation of hybrid, it will be better than parent plants in different qualities. They are high yielding or better quality and are disease resistant. So this is the process of artificial pollination. So what is artificial pollination? Artificial pollination में हम लोग in case of bisexual flower, anther mature होने से पहले ही we will remove the stamen. Then इन दिस फ्लावर, वही फ्लावर में हम लोग गाइनोशियम को इंटैक्ट रखेंगे बाय कवरिंग विथ पेपर और मसलिन बैग. एंड आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, वी विल कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर एंड जस्ट डिपोजिटेड अपॉन द स्टिग्मा. देन द पॉलिनेशन process will be takes place, and after pollination, a new hybrid variety will be produced. That is generally better than their parent plants.
by their high yielding of better quality and disease resistant characteristics. Next, know your scientist. Gregor Mendel was an Austrian monk who bred thousands of pea plants by artificial pollination in the botanical garden of his monastery. He used paintbrush to painstakingly transfer pollens from one plant to another to make his crosses. So ग्रेगर जॉन मेंडल ने पेंट ब्रश यूज किए थे पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए और उसको नॉर्मली स्टिग्मा में ट्रांसफर करने के लिए. बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करके ही एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस and laid the foundation of genetics. So, depending upon his experiments, he established the principle of inheritance and laid the foundation of genetics. So, what is genetics? Genetics is the study of genes, heredity, and variation. So, basically, Gregor Johann Mendel is known as the founder of genetics. What is genetics? It is a study of gene, heredity, and variation. Next, fertilization process. Very important portion. What is fertilization? All of you know the fusion of male and female gamete is known as fertilization process. So, what is the process? When a pollen grain reaches the stigma, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में रीच करने के बाद इट बिगन्स टू ग्रो ए पोलन ट्यूब. लुक एट द फिगर. आफ्टर फॉलिंग ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जस्ट ग्रो इनटू पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के अंदर ग्रो करने में लग जाता है. देन इट ट्रेवल्स डाउन थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी. सो इतना दूर तक ट्रेवल करने के बाद ये ओव्यूल्स में घुस जाता है थ्रू ओवरी. द न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स. पोलन ट्यूब के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है. देन ए मेल गैमेट और मेल सेक्स सेल ट्रेवल्स डाउन ईच पोलन ट्यूब एंड फ्यूजेस विथ एग सेल इनसाइड एन ओव्यूल. सो एक मेल गैमेट डायरेक्टली ओव्यूल को फ्यूज कर देता है. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. And the single cell produced as a result of fertilization is called zygote. So after fertilization, the single cell that is produced, that is also known as zygote. So what is the process? Just I will discuss once again. Look at the process. After falling the pollen grains upon the stigma, pollen grains start to grow into pollen tube. ये पोलन ट्यूब के अंदर ग्रो करना चालू कर देता है. एंड डायरेक्टली ट्रेवल टू द ओवरी. ओवरी तक ट्रेवल करने के बाद इट ट्राई टू एंटर्स इनटू द ओव्यूल्स. मतलब ओवरी को भेद करने के बाद ये ओव्यूल्स तक पहुंचना चाहते हैं. आफ्टर दैट नॉर्मली न्यूक्लियस ऑफ द pollen grains inside the pollen tube it divided into two male gametes. दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है और एक मेल गैमेट डायरेक्टली ओव्यूल्स तक पहुंचने के बाद उसको फ्यूज कर देता है. सो दिस इज द प्रोसेस. whereas male and female gamete fuse together to form a single cell that is known as zygote, and the process is known as fertilization. So here is a gist. Pollen grains is deposited on the stigma of a flower. एक फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स डिपोजिट हो रहा है. Pollen grain swells and begin to grow a pollen tube. After falling, then pollen grain swell. ये फूल जाएगा. Then it begins to grow into pollen tube. Then the pollen tube grows down through the style to reach the ovules inside the ovary. Through style, ये pollen tube normally ovary तक घुस जाता है. The nucleus of pollen tube divides to male gametes. A male gametes travel down the pollen tube and fuses with egg cell. So एक gamete directly egg cell को fuse कर लेता है और directly transfer into a single cell that is also known as zygote.
Then the zygote divides several times to grow an embryo. Then the embryo is the part of seed which grow into a new plant or seedling under favorable condition. So that is the process of fertilization. So student, hope all of you understood what I have discussed in this video. So for today, up to this portion.